Operators and expressions. Programming in C and numerical methods. Maths paper 3rd for the students of BA, BSc 4th sem 2nd year. We will do operators and expressions in this lecture. C include a large number of operators which falls into several different categories. As operator is a symbol that tells the computer to perform certain mathematical or logical task. Operator definition of operator is operator is a symbol that tells the computer to perform certain mathematical or logical task. Operators are used in programs to perform operations on data and variables. Data और variables पे जो operations करने हैं वो operators करते हैं. They usually form a part of the arithmetical or logical expressions. The data items that operators act upon are called operands. Operands कहते हैं उनको. Some operators require 2 operands while others act upon only 1 operand. कुछ operators 2 operand चाहिए, कुछ के लिए एक ही चाहिए. Few operators permit only single variables or constants or operands as operands, variables or constants as operands. The C operators can be classified into a number of categories. They include arithmetic operators, relational operators, logical operators, assignment operators, increment and decrement operators, conditional operators, bitwise operators, special operators. The data items that operators act upon are called operands. Some operators require 2 operands while others act upon only 1 operand. A few operators permit only single variable or constants as operands. The C operators can be classified into a number of categories. They include arithmetic operators, relational operators, logical operators, assignment operators, increment and decrement operators, conditional operators, bitwise operators, special operators. An expression is a combination. Expression की क्या definition? Combination of operators and operands. Operators और operand का combination उसको expression कहते हैं. It is formed according to the syntax of the language. It is formed according to the syntax of the language. For example, a plus b equal 5, x minus 5 equal to 10.5, 15 less than 10. होता नहीं है. A plus equal b are all expressions. अब पहला arithmetical operations हैं. And arithmetic operators are used to perform arithmetic operations on data. There are 5 arithmetic operators in C. BIZ operators: purpose, plus, addition, minus, subtraction, star, multiplication, backslash, division, percentage, modulo division है. modulo division, percentage क्या? modulo division, star, plus, addition, minus, subtraction, star, multiplication, backslash, division, percentage, modulo division. There is no
exponentiation operator in C. There is no exponentiation operator in C. However, there is a library functions POW power exponentiation ऑपरेटर नहीं होता सी लैंग्वेज में। प्लस ऑपरेटर है प्लस एडिशन के लिए, माइनस है सब्ट्रैक्शन के लिए, स्टार है मल्टीप्लिकेशन के लिए, बैकस्लैश है डिवीज़न के लिए, परसेंटेज है मॉडुलो डिवीज़न के लिए। परसेंटेज ऑपरेटर किसके लिए? मॉडुलो डिवीज़न कॉन्ग्रुएंस वाला। देयर इज़ नो exponentiation operator in C, exponentiation operator in C, और there is a library function है जो POW to carry out its operation है। The operands acted upon by arithmetic operators must represent numeric values. Thus the operands can be integer quantities. operands क्या है? integer quantities हो सकती हैं। thus कहता है operands can be integer quantities, floating point quantities और characters। और character characters having a corresponding numeric value. The modulo division percentage requires that both operands be integers and the second operand be non-zero. The modulo division क्या है? The modulo division percentage require that both operands be integers, दोनों operands integer होने चाहिए, and the second operand be non-zero। second operand क्या है? non-zero होना चाहिए। both operands will be integers and second operand है पॉजिटिव होना चाहिए जिसको डिवाइड करना। डिवीज़न बाय जीरो रिजल्ट्स इन एन एरर। अगर डिवीज़न करेंगे जीरो से तो एरर आएगा। द मॉडुलो डिवीज़न कांट बी यूज्ड ऑन फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। जो मॉडुलो डिवीज़न है कांट बी यूज्ड ऑन फ्लोटिंग पॉइंट डाटा पे यूज़ नहीं करते, ठीक है। Also division operator backslash requires that the second operand be non-zero। the second operand है ना फर्स्ट a डिवाइड b, वो second operand non-zero होना चाहिए क्योंकि a डिवाइड b second operand will be non-zero। integer division truncates any fractional part। इंटीजर डिवीज़न करेंगे ना जब तो उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आएगा। द डेसिमल पार्ट ऑफ द रिजल्ट इज़ ड्रॉप्ड। डेसिमल पार्ट ड्रॉप हो जाएगा। वाइल ऑन ए फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न, जब फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न इंटीजर डिवीज़न करेंगे तब ऐसा होगा, लेकिन जब फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न करेंगे द रिजल्ट इज़ ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा रिजल्ट। ये ऑपरेटर्स थे। अब इंटीजर अर्थमेटिक, when both the operands of an arithmetic expression are integers, the expression is called an integer expression, and the operation is called integer arithmetic। और इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? इंटीजर अर्थमेटिक। इंटीजर अर्थमेटिक ऑलवेज yields an integer as a result। जो इंटीजर अर्थमेटिक है ऑलवेज yields an integer as a result। suppose that a and b are two integers।
Suppose that a and b क्या है are two integers whose values are 7 and 2 respectively. The several arithmetic expressions involving these values are, कहता several arithmetic expressions involving these values are integer arithmetic when both the operands of an arithmetic expression are integers. The expression is called an integer expression and the operation is called integer arithmetic. Integer arithmetic always yields an integer as a result. Suppose that a and b are two integers whose values are 7 and 2 respectively. 7 और 2 है. Several arithmetic expressions involving these values are a plus b equal to 9, a minus b equal to 5, a star b equal to 14, a divided b equal to 3, decimal part truncated, a percentage modulo b equal 1, remainder of division. A plus b equal 9, a minus b equal to 5, a star b equal to 14, a divided b equal 10, decimal part truncated. A modulo b equal 1, remainder of division. Integer arithmetic when both the operands of an arithmetic expressions are integers. The expression is called an integer expression and the operation is called integer arithmetic. और जो ऑपरेशन है ना उसके integer arithmetic कहेंगे. Integer arithmetic always yields an integer as a result. उसका result integer आएगा हमेशा. Suppose that a and b are two integers whose values are 7 and 2, right, respectively. Several arithmetic expressions involving these values are 7 plus 2, 9, 7 minus 2 equal to 5, 7 multiplied by 2, 14, 7 divided by 2, 3, decimal part truncated. इंटीजर में 7 डिवाइड 2 है ना तो 3 आएगा. 7 भाग 2, ए परसेंटेज मॉड्यूलो डिवीज़न. तो 7 को 2 से भाग करेंगे. 7 ये 6, एक रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर ऑफ डिवीज़न है. रियल अर्थमेटिक, एक इंटीजर अर्थमेटिक ऑफ रियल. एन अर्थमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्विंग ओनली रियल ऑपरेंड्स is called real arithmetic. A real operands of an arithmetic operation involving only real operands is called real arithmetic. Since floating point values are rounded to the number of significant figures permitted, the final value is an approximation of the correct result. There is no certainty that the final value calculated to correct and accurate. There is no certainty that the final value calculated is correct and accurate. It will always be an approximation. It will always be an approximation. It will always be an approximation.
An arithmetic operation involving only real operands is called real arithmetic, since floating point values are rounded to the number of significant figures permitted. The final value is an approximation of the correct result. The final value is an approximation of the correct result. The final value real arithmetic. An arithmetic operation involving only real operands is called real arithmetic, since floating point values are rounded to the number of significant figures permitted. The final value is an approximation of the correct result. The final value is an approximation of the correct result. एक मिनट क्यों तो इतना गर्म क्यों हो रहा है, इसका यही है ठीक. There is no certainty that the final value calculated is correct and accurate. It will always be an approximation. Suppose that x and y are two floating point variables whose values are 12.5 and 2.0 respectively. An arithmetic operation involving only real operands is called real arithmetic, since floating point values are rounded to the number of significant figures permitted. The final value is an approximation of the correct result. There is no certainty that the final value calculated is correct and accurate. It will always be an approximation. Correct and accurate approximation होगा. Two floating point variables whose values are 12.5 and 2.0 x and y. Then we will have x plus y equal to 14.5. ठीक. X minus y 10.5. X multiplied by 25. X y 6.25. Okay. X divided by 10. Finally, suppose that v1 and v2 are character type variables representing the characters p and q, p and t respectively. Characters p and t respectively. P is encoded at 80 and T is encoded at 84. P को encode 80 कह रहे हैं, T को 84 कह रहे हैं. In ASCII character set है. Then we have V1 equal to 80, V1 plus V2 equal to 164, V1 plus V2 plus 9 is equal to 173. V1 plus V2 plus ये colon apostrophe 9 apostrophe clause. So during integer division, if both operands are of same sign, the result is truncated towards 0, that is 8 divided 9. During integer division, if both operands are of same sign, the result is truncated towards 0. 8 divided 9 0. Minus 4 divided minus 5 0. However, if one of them is negative, the direction of truncation is machine dependent, that is minus 4/5 may be 0 or minus 1. The interpretation of remainder operation is unclear when one of the operands is negative. Most versions of C assign the sign of first operand to the remainder. Thus, the condition
A assign A divide B multiply by B plus A modulo division B will always be satisfied regardless of the sign of the value represented by A and B. Precedence of arithmetic operators. प्रीसीडेंस क्या होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का? प्रीसीडेंस प्रायोरिटी ऑपरेटर्स फर्स्ट पैरेंथेसिस डिस्क्रिप्शन सेकंड परसेंटेज मॉड्यूलो और स्टार। देखिए पहले पैरेंथेसिस को लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न, फिर मॉड्यूलर डिवीज़न है। पैरेंथेसिस राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी, राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट, डिवीज़न लेफ्ट टू राइट, मॉड्यूलर डिवीज़न लेफ्ट टू राइट, प्लस माइनस पहले पैरेंथेसिस फिर मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीज़न फिर मॉड्यूलर डिवीज़न। थर्ड प्रायोरिटी प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन लेफ्ट टू राइट। और फोर्थ प्रायोरिटी होगी असाइनमेंट। नेक्स्ट इज relational operators. Relational operators are symbols that are used to test the relationship between two variables or between a variable and a constant C. Has 6 relational operators defined as follows: operator greater than, less than, greater than equal, greater than or equal to, less than or equal to, not equal to, either greater than or less than, either greater than or less than। ठीक। रिलेशनल ऑपरेटर्स पहला था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अब है रिलेशनल ऑपरेटर्स। आर सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और बिटवीन ए वेरिएबल एंड ए कांस्टेंट। वेरिएबल एंड ए कांस्टेंट के बीच में या बिटवीन टू वेरिएबल्स के बीच में। C has 6 relational operators defined as follows: greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, not equal to, either greater than or less than, either greater than or less than। Notice that some of these operators consist of only one character, whereas other contain two, one character or other two। Those with two characters must not contain spaces between them, otherwise it results in error. In an error, the value of a relational operator is either true or false. For example, 5 less than 10 is true, 15 but 15 less than 10 is false. When arithmetic expressions are used as either side of a relational operator, the arithmetic expressions will be evaluated first। arithmetic expressions को पहले evaluate करेंगे and then the results compared, और फिर result को compare करेंगे। ये note है, the assignment operator should not be confused with रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल। जो रिलेशनल ऑपरेटर इक्वल है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर से कंफ्यूज नहीं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद रिलेशनल ऑपरेटर। द फॉर्मर इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू ऑन इट्स राइट टू द वेरिएबल ऑन इट्स लेफ्ट। जो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, the former is used to assign the value on its right। right को assign करेगा वैल्यू कौन सी,
टू द वेरिएबल्स ऑन इट्स लेफ्ट, जो इसके लेफ्ट में जो वेरिएबल है उसको वैल्यू राइट में असाइन करेगा। वेयर एज द लेटर इज यूज टू कंपेयर द वैल्यूज ऑन इट्स टू साइड्स, दोनों साइड्स जो इक्वल टू है ना वो है। वेयर एज द लेटर इज यूज टू कंपेयर द वैल्यूज ऑन इट्स टू साइड्स। प्रेसिडेंस ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स, फर्स्ट लेस देन आता है, फिर लेस देन इक्वल आता है, लेस देन और इक्वल टू, फिर सेकंड में ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी रहेगी इक्वल टू नॉट इक्वल टू, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। द लॉजिकल AND and OR or operators combine conditional expressions to form a new complex expression. The logical NOT operator is a unary operator that operates on a single expression, either simple or complex. Following are the symbols corresponding to the logical operators. Operator meaning exclamation निशान, logical note, unary operator, pipe, logical or, double ampersand, logical and, ऑपरेटर है एक्सक्लेमेशन का निशान, लॉजिकल नोट, यूनरी ऑपरेटर, लॉजिकल और है पाइप का निशान, लॉजिकल एंड है डबल एम्परसेंड। द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड डबल एम्परसेंड एंड आर यूज्ड टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशंस एंड मेक डिसीजंस, और डिसीजंस बनाते हैं। फॉर एग्जांपल A + B ग्रेटर देन C एंड C ग्रेटर देन 10, लॉजिकल एंड, एम्परसेंड डबल एम्परसेंड, लॉजिकल एंड, A + B ग्रेटर देन C एंड C ग्रेटर देन 10, सेमीकोलन। An expression of this kind which combines two or more relational expressions is termed as a logical expression or a compound relational expression. Compound relational expression या logical expression. Logical expressions also yield other a value true or false. Value true or false. Thanks.